Welcome everybody. Very good afternoon. स्वागत है आप सब लोगों का. कैसे हैं आप सब लोग? How are you all? आप सब लोग ठीक है? Everything is fine at your end? I'm good. I'm good. So the topic of the discussion is how to improve communication skills. Difficult? Nah. In this era, it is very easy. The reason I'll tell you. Okay. Let me just wait for a few more minutes till the people's other students join, and then we will continue further the discussion. Till then, if you have any kind of discussion, queries, questions, you guys can ask me. तो आज कौन है हमारे साथ? स्नेह, ऐश्वर्य, उदयन, यश, रानू और आई कांट सी अदर फेलास हियर. बाकी लोगों के नाम हिडन हो जाते हैं, दिखते नहीं है. चलिए लोगों को बुला लेते हैं. लिंक शेयर कर दूं? कहाँ हो भाई बाकी सब लोग? आ भी जाओ. So then you can speak Bengali. Yeah, I can see both plus and non-plus chats. Good. That's really good. Good afternoon, Yash. Hello. I can see only plus और iconic. अच्छा, प्लस वाले स्टूडेंट सिर्फ प्लस के ही लोगों के चैट देख सकते हैं, ऐसा है? ओके. दैट्स टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें कौन सा पंचायती करनी है, राइट? अच्छा किया अनअकैडमी ने वैसे नॉन प्लस लोगों की चैट्स नहीं दिखा के, ताकि स्टूडेंट्स को पंचायती में इंटरेस्ट ना रहे. वही चैट्स दिखे जो देखने की है, काम की है. दैट्स इट. है ना? ओके. सी वॉट एवर द लैंग्वेज यू स्पीक, डजेंट मैटर. बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी और वॉट एवर द लैंग्वेज यू स्पीक, when you go for masters in good college, when you go for a job or anywhere, English is must. English आपको आनी ही चाहिए. South India, we have 4 languages, actually more than that, but 4 major languages in South India. We have Malayalam, we have uh, Telugu, we have Kannada, we have Tamil. Some people speak Konkani also, Tulu also. But one thing is for sure,
आपको टीम को मैसेज की थी, ओके, इन्होंने आपका इंस्टा लिंक और अनअकैडमी की प्रोफाइल वो एक मैसेज आया होगा। तो साउथ इंडिया में वी हैव लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, राइट? बट सी स्टिल everywhere, I'm not saying that it is only in North India or South India or a specific part of country, but everywhere we are lacking good communication skills. See, manageable we can speak for sure, but we need to speak the language which must be the language of the world, and that is English. And how we can improve? See, we have three aspects of language. First, the verbal. Second, written. Third, reading. Till now, most of you, almost all of you, are fine with these two. Why? Just because of the usage of mobile phones. Already, you guys are good in up to certain level of written skills and reading skills, but not up to the mark. I have seen the people writing very basic, you know, spellings not correctly. So the doubt, if you have doubts, you can ask. This is the word. This is the word, but spelling people are writing wrong, and they are not even trying to make it correct. The sentence making, most of the students are not good in that. They are using what kind of verbs, form, etc in the statements. It's so very poor. It looks like you are not having the knowledge of language. The very basic mistake everybody is doing when they speak about present definite, like मैं जाता हूं, I go. In that present definite, when we use third person singular form like he, she, it, somebody's name, etc, we need to use the s, the plural of the verb. He goes. Correct. Grammatical, lot of grammatical mistakes. He, she, it, somebody's name. Udaan drinks water. Udaan reads, studies, not read. So there are small, so many mistakes. Like when we say, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये question solve नहीं किया, I did not. When I say did not, we will not have to use the second form of the verb. I did not study or I did not solve. But majority of the world is saying that I didn't solve. Third form or second form they are using. I didn't knew. No, I didn't know. It should be I don't know or I didn't know. So there are small, so many grammatical mistakes people are doing. Okay, slowly we can learn, but only when we want to. If somebody is not coming up to you and telling you that here you are making mistakes, you will keep making mistakes. And that particular mistake sometimes, okay, manageable. In industry, up to certain level, manageable. But when you grow and go to the next level, in industry also, anywhere, good communication skills are, you know, very important. Yes, Udian, exactly. A lot of parsing errors in the statements. So how exactly we can improve the communication skills? By learning correct things. No, I will not take course on English, beta. I can teach you basic tenses, but I don't think so. I'm the good person to teach English. See, I'll tell you what. I'll tell you my story. मैं अपनी story बताता हूँ. I was in very young age, and in summers, my sisters had to go for English classes just because they were weak. Both were elder sisters, and they were not so good in English. So in the summer, they used to go for English coaching, like a tuition, and just to give them company or something.
My father told, no, you will also have to go. So I was what, 8 years something, some 8 to 10 year old person who is studying in a Hindi medium school. The school is, affiliated with Vidya Bharati school, which is Saraswati school. We used to use more Hindi and typical Sanskrit word while talking. Like teacher, we used to say teacher ko Acharya ji. If we had to, come into the class, we had to say, क्या हम कक्षा में आ सकते हैं? We had to ask like that way. So it's like purely we were using more of Sanskrit and Hindi words. So from that particular background, to learn English for 3 years, I have studied only tenses, how to form the sentences. 3 years only tenses. The teacher has fed the tenses inside my head like anything. And because of that particular 3 year ka training, from 10 to 13-year old I was, my sentence framing got correct. After that, what? After that, I had to just use them just because I knew what is the correct format of the statement, the basics, the articles, tenses, active voice, passive voice. And I can say that I was quick enough to grasp that in the real world. Very simple. So you will have to learn 10 phrase, what form of word you'll have to use with this. If I'll say I will, then first form of the word. I will be, then ing form of the word. I have or had, third form of the word. Gone, like that way. So these things I have learned in very early age. And because of that, of course, I had to just practice it and could improve my skills. Same to same thing. You just learn the tenses first. So if you want to go with your verbal skills, technically or grammatically, you should be correct. So learn the tenses. And along with that, practice of speaking. If you meet somebody, you try to speak in English. A little, not much, but a little. Thoda, thoda. You need to start practicing speaking. When you speak, you understand that whatever you know, that conversion doesn't happen quickly. Like you know Hindi, from Hindi you will convert based on the tenses, etc., in English in your mind, and then you will speak. It takes time, but slowly, when you will practice, when it comes into the practice, you will be definitely able to improve your verbal skill. See, this is the era when you have a lot of mobile phone usage, right? So you read a lot of chats, you read a lot of memes, etc., in English. So your vocab can improve slowly automatically when you keep reading. You read English newspaper. If not, then at least you read English news on some, some kind of websites or some kind of apps. Even it is easier. Yes, English newspapers are writing too much tough words. It's okay. Sometimes other portals are giving you news in some easier languages. Start reading it. You can definitely, you know, uh, improve your vocab. Slowly, you will use those words in your life, and then it will be amazing to see, oh, a lot of changes. I'll tell you my personal experience. When I passed my 12th exam, from there, when I went to engineering, that was the first experience I was having of introduction of English as my formal, base of or medium of studies. So when I used to read
the statements in the books. I still remember chemistry I was reading one fine day. I thought that, okay, college started, chemistry ke classes is going on. Let's read it from the book. So I have issued one book from college. I started reading it. And now the problem is I don't know many of the words just because I have never used any kind of phrases in my entire life. So, first few words I still remember which I have read in my dictionary. First word was in order to and instead. These are like very normal words, very popular words or phrases. But these, I didn't know what is the meaning of instead. Instead of this, you can go with this. Instead means uski bajay, uski jagah pe. In order to. I still remember the Hindi, definite Hindi word of in order to, ke uddeshya se. These are the learning I had in my first year of engineering in 2006 when I got into engineering. But I understood that if I'll have to understand the concept अगर मुझे पता करना है, if I'll have to understand the concept of the book, context of the book, I'll have to understand first the real normal meaning, that the translation meaning. And for that I had to work hard. डबल मेहनत करनी पड़ी. फर्स्ट इंग्लिश समझना, सेकंड उसका कंटेक्स्ट या उसका डेफिनेशन समझना या मीनिंग समझना, सिमेंटिक समझना. टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगा बॉस, बहुत टाइम. इंग्लिश मूवीज हेल्प अ लॉट, यस. व्हेन आई वेंट टू आईआईएससी, फर्स्ट टाइम आई हैव वॉच्ड अ मूवी, इंग्लिश मूवी, that too in Hindi translation. Sorry to say that. So first movie I have watched English movies, Hollywood movies when I went to IISc Bangalore. Before that, I have never watched any kind of English movies at all. My few of the friends were watching some English movies, listening some English music, but अपने लिए English like, oh, don't know. E का चीज होवे. I still remember went to IISc. ना, no English commentary, कुछ समझ सूझ नहीं पड़ती थी. That was only understanding I was having of English. I still remember when I went to IISc Bangalore, वहां पे IBM के CEO या बहुत बड़े कोई तो ऑफिसर आए थे. I don't remember exactly who was the person, and he was having some lecture. My all of friends are listening him like anything, and I am like कि क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझाओ, मेरे को एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है. I was not able to understand a single word at all. Why? Just because of the accent. I was not able to catch a single word at all. Not a single word. मुझे एक word समझ में नहीं आया क्या कहा. Accent ही समझ नहीं आ रहा. And then from there to here, when I try my level best to understand English movies without subtitles and in the English itself, that's the best achievement I can have. Yes, sentences are fine, but at least accent is also a big problem, right? And later on, when you will go to IT industries, you will have to, you know, manage that particular thing in the regular days, just because, see, you will have to communicate with all the people around the world. Yes, in the meetings you have people from USA, people from Europe zone, Australia, UK people and Australian people speak very quick. The accent is very quick. बहुत problem है. So verbal skills you can increase slowly using, first learn the tenses. If you have some kind of formal definitions of each and everything, you will be in better situation. Practice, of course, a little more practice. Talk to your friends, talk to your family members who can speak in English. Talk to the educators if you are asking doubts or something in English. Just because in interviews you will need it. Interviews में बहुत जरूरत पड़ेगी.
बहुत ज्यादा. And then I have seen it when you don't speak proper English or when you can't explain the things which you know, even though if you have good knowledge, you might not be passed into the interviews. For written skills, slowly you will learn. I don't think so. Right now, you guys are having written skills needed as of now, but that you will improve while writing mails or in the industry or while writing research papers in the IITs or other colleges. दोस्त लोग मोस्टली स्पीक इन रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो. घर में भी इंग्लिश में बहुत थोड़ी करते हैं. उदयन, आपके आसपास के लोग कम से कम इंग्लिश समझ तो सकते हैं. फॉर अस इट वाज लाइक मेरे दोस्त लोग वर सेम टू सेम. अगर आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, ओहो ये देखो विदेशी आ गए यहाँ पे, अंग्रेजी बोलते हैं, आहा. They will add some extra 2-3 words in between, you know that, right? अच्छे अच्छे वाले words. इनको देखो साहब, अंग्रेजी बोलना है. But see, I have heard bad things about my English also. It's not like I was always on the top, etc., etc. When I was in my vivas, I have heard a lot from my colleagues itself. In the final vivas, one of my colleague told me, "You don't know English, right? What you will do? Gate में अच्छी rank लाने से ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है." And I'm like, okay, if you are saying so, I'll work on my English also. So the taunts and all used to come a lot. बहुत सारे. So written skills right now not needed for you guys until you'll have to write some kind of subjective answers, etc. But not too hard needed. Reading skills you need. Just because if you guys are going for any kind of written test, you will have to improve this reading skills. And that can be done by only reading. Keep reading. जब भी time मिले, read करो. Rather than just looking at the memes, etc., etc., you can spare little more time on reading the news. I do have a particular news app, Daily Hunt or News Hunt, some kind of a name it is. And that particular thing is really good. Just because I used to read news from there. All type of news comes, whichever you follow more. There was a course in my college, professional communication, they taught in final year. Oh, we had communication skills course, and that particular communication skills course was there in my first semester itself. And you guys will not believe, I was the second topper in that particular course of the class in my finals after coming up from Hindi medium background. Just because that course was totally about grammar being correct. And I was always knowing the grammar and the basics up to really good level. मुझे grammar बहुत अच्छी पता थी. Reading Unacademy notes of learned topic, okay, that is also good. Even though reading books can also help of learned topic. जो आपने पहले से सीख लिया है, उनको आप books से भी पढ़ सकते हो. तो उससे भी आपको काफी फायदा होगा. These 3 skills you can improve. एक और एग्जाम्पल है मेरे पास मेरी लाइफ का, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. engineering, the very first day, the class name was basic electrical engineering. और उसमें I had been asked that एक static electricity का कोई तो रूल था, वो बताओ.
I was actually the topper of the class, having highest percentage in 12th. तो मुझे बोला कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कोई तो रूल बताओ, एंड आई एम नॉट नोइंग दैट व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. मुझे तो पता ही नहीं है क्यों, जस्ट बिकॉज आई हैव स्टडीड फिजिक्स इन हिंदी मीडियम व्हिच इज स्थिर वैद्युत फॉर मी. Somehow somebody just translated and told that okay, sthir vidyut wala, and I spoken that particular complete rule in Hindi, vidyut dhara ka pravah etc etc and something, and then the teacher and all other fellas are scratching their head कि ये बोल क्या रहा है हिंदी में, हमको समझ नहीं आ रहा. And then everybody was laughing etc etc. Humiliation, big humiliation. But I was not having any kind of awareness. Teacher then told that physics का book लो 11 12 का, फिर उसमें हिंदी से इंग्लिश का मीनिंग देखो और लर्न करो, just because you will need to know a lot of English words. From there to here, I have read a lot. बहुत बहुत पढ़ा है मैंने, बहुत बुक्स को प्लस अलग 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 नोट्स को, learned a lot. But somehow learned. सबसे इंपॉर्टेंट बात वही थी कि कुछ भी करके सीख लिया है. And still I'm learning some new words. जैसे कि आज एक आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मुझे एक वर्ड दिखा, ग्लीन, जो मैंने पहले शायद कहीं पढ़ा हो, बट उसका मीनिंग जो है वो आज देखा कि ज्यादा मशक्कत करके प्राप्त किया हुआ ज्ञान या ज्ञान प्राप्त करना, obtaining the information by a lot of efforts. डिफिकल्टी से अगर कोई नॉलेज ऑप्ट करना है तो उसको उसकी वर्ब है ग्लीन. दैट वेरी वेल सुटेबल फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो. बहुत मुश्किल से ज्ञान मिलता है हमको तो, है ना, अच्छा वाला. बाकी तो फिर ज्ञानी बैठे ही हैं यहाँ हर जगह पे, है ना, नहीं. चलिए, तो कुछ ऐसे आप लोग थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं. आपके सेंटेंसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. मैंने देखा है इनफैक्ट कि स्टूडेंट्स नॉलेज बहुत रखते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कन्वे देयर ओन थॉट्स इनटू करेक्ट वर्ड्स टू द इंटरव्यूअर्स. कभी कभी इंटरव्यू इसलिए भी नहीं निकलते, बोलना क्या चाहते हैं और बोल क्या रहे हैं. मैंने कल बताया था, सर सी गुड सर्कल इज देयर. सी सर, वेरी ग्रेट ट्राइंगल. व्हाट अ ट्राइंगल सर. The words are not matching with the thoughts. So it happens. So you'll have to be very careful about choice of words. बहुत बहुत केयरफुल होना पड़ेगा आपके लिए. अदरवाइज आप इतना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे जो शायद आपके लिए सही नहीं होगा. दो इट्स लैंग्वेज, मतलब आपका नॉलेज डिफरेंट है, हाँ जी, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है, तो वही वही प्रॉब्लम को आपको एलिमिनेट करना है कि आप एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम ना फेस करें. अदरवाइज होता क्या है ना, इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे एक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपना क्रेडिट ले लेते हैं, आपके काम का भी क्रेडिट वो ले जाएंगे क्योंकि वो एक्सप्रेसिव हैं अलग अलग स्किल्स पे. इसलिए तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है. मेरे प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब थे, बहुत ज्यादा खराब थे. आई मीन प्रोनाउंसिएशन पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था मैंने. आई स्टार्टेड टीचिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस पे तो कभी ध्यान दिया नहीं. द वेरी फर्स्ट टाइम आई फोकस्ड ऑन माय प्रोनाउंसिएशन व्हेन 2014 की बात है, अराउंड सितंबर अक्टूबर की बात होगी, जब मैं बैंगलोर में पढ़ा रहा था. और आई वॉज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स एंड आई टोल्ड देम कि यार एक बड़ा अच्छा ट्रैकिंग प्लेस है बैंगलोर के पास, आप लोग कभी गए हो वहां पे, आई वॉन्ट टू गो देयर. एंड देन वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड नहीं सर, नहीं गए. तो मैंने कहा हाँ यार, अभी तो वो बेंड है.
तो फिर स्टूडेंट बोला ओ यू मीन बैंड है वहां जाना, एंड देन आई अंडरस्टूड कि नहीं यार ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, राइट। सो ऐसी कई बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी लाइफ की लर्निंग फेज से निकली हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग शायद उतना माइंड करते नहीं, बट मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, जस्ट बिकॉज व्हेन आई वांट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी वेदर लाइव और वर्चुअल, आई वांट टू बी प्रेजेंटेबल through my looks, through my skills, communication, presentation skills, through my knowledge, everything. मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस हूँ इस चीज को लेके कि अगर मैं किसी के सामने खड़ा हूँ, बातें कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कुछ भी चीज, तो मैं प्रेजेंटेबल बनूं। ऐसे कोई मुझे ये ना बोल पाए कि अरे ये कौन आ गया, किसी भी केस में किसी भी क्लास पे मुझे ये आउट ऑफ द क्लास फील नहीं करना है। So I will never be, below in terms of anything. And that is why I focus a lot of things, a lot of on my looks, in fact, on my fashion too. That is why I work a lot of things, think about a lot about my presentation, about my classes, about my teaching, etc. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा दो, पढ़ा दूंगा, मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, जो मुझे याद है सब पढ़ा सकता हूँ। मैं टीओसी पढ़ा सकता हूँ, डिस्क्रीट मैथ पढ़ा सकता हूँ, पढ़ के मैं सब पढ़ा सकता हूँ। बट मैं उस लेवल तक एटलीस्ट जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं जब पढ़ाऊँ तो स्टूडेंट को लगे कि हाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सर ने बस नाम के लिए पढ़ाया, नेवर एवर विल बी द केस। And that is where my character is different than others will feel like wow yaar Vishwadeep, what an English you speak, और अगले 4 साल के बाद मिलेंगे तो सेम, योर इंग्लिश इज रियली गुड, but in those 4 years they will not work on their English or their pronunciation or something. I still do this कि कभी अगर कोई वर्ड मुझे नया मिलता है या कुछ डिफरेंट मिलता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करता हूँ गूगल पे लिख के, गूगल पे उसका वर्ड मीनिंग लिखता हूँ, मीनिंग चेक करता हूँ, फिर उसको सुनता हूँ 4-5 बार और फिर उसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की कोशिश करता हूँ हमेशा, ताकि मैं कभी किसी के सामने ऐसा शो ना हूं कि ओ मैं बोल क्या रहा हूं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस अबाउट, कुछ और चीज जो आप डिस्कस करना चाहते हो? आइडिया तो अच्छा दिया है, पढ़ा सकते हैं इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश और टेंसेस तो बता ही सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। इसने कहा था ये, यश ने, नहीं ऋषभ ने। लोन पढ़ा सकते हैं, चलिए देखते हैं यूट्यूब पे कभी इंग्लिश स्पीकिंग का कोई क्रैश कोर्स ला सकता हूं तो लेके आता हूं, कहीं ना कहीं हेल्प ही होगी स्टूडेंट्स की। व्हाट कोर्स और एजुकेटर शुड वी फॉलो फॉर इंग्लिश? ऋषभ यार यूट्यूब पे ना मैम है, क्या नाम है यार उनका, मीता सुरती मैम की कुछ क्लासेस थी। आप जब क्लास लेते हो यूट्यूब पर इंग्लिश में, इट शोज योर कॉन्फिडेंस, वो भी जरूरी है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। श्रेयस सर को भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हो ऋषभ, बिल्कुल कर सकते हो। यूट्यूब पे कुछ क्लासेस मीता सुरती मैम की थी, वो भी अच्छी थी। श्रेयस सर को फॉलो कर लीजिए वैसे अनअकैडमी पे, काफी सही रहेगा, यू कैन फॉलो हिम। See, when I used to go to Pune or Delhi or some other North Indian institutes, मैं हिंदी में बोल के पढ़ाता था। सारे दूसरे टीचर्स जो हैं वो बोलते थे सर आप हिंदी में क्यों पढ़ाते हैं, आई यूज्ड टू टेल देम कि बच्चे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। बट स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगता था कभी कभी कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, तो बीच में मुझे इंग्लिश बोलनी होती थी काफी सारी, ताकि उन्हें लगे कि आई कैन स्पीक और आई कैन टीच इन इंग्लिश ऑल्सो। बट फिर भी मैं हिंदी में प्रेफर करता था पढ़ाना या बोलना, जस्ट बिकॉज दैट्स माय मदर लैंग्वेज, मुझे अच्छा लगता है बोलना वो। अभी भी जब मैं अपने फ्रेंड्स या अपने आसपास के लोगों से बात करता हूँ, मैं
हिंदी में बात करना प्रेफर करता हूँ फिर भी। चलिए, the people who will watch or watching this video not on plus February 9th, आज आपके पास आखिरी दिन है। अच्छा बड़ा ऑफर और डिस्काउंट का आप लोग ये कोड यूज करके और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके फाइन, तो फिर ये सेशन एंड करते हैं यहाँ पे और डिस्कस करते हैं आगे की और कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है तो उनको एक-एक करके। कल कोई सेशन होगा उदयन, मोस्टली तो फ़ील नहीं हो रहा कि कोई सेशन कल इस टाइम पे होना चाहिए। विल सी, अगर लगेगा तो आई टेक इट, अदरवाइज़ मोस्टली नहीं। चलिए, ओके देन गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सी